So, students, our today's topic of discussion is theories of reaction rates. So, basically, two theories ne collision theory and transition state theory. Firstly, collision theory. So, collision theory raje based hai kinetic theory of gases, according to which molecule of gas are continuously moving and hence colliding with each other. So, at least two molecules are required for collision. So we study bimolecular theory, simple case. So next है कि collision theory for bimolecular reaction. So bimolecular reaction ਦੇ ਵਿੱਚ two molecules ਨੂੰ collision ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ molecules collide ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ actual ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ reaction ਨੂੰ promote ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. So underline this line that in order that two molecules may react, they should not only collide but the collision must be associated with the sufficient energy so that molecules are activated. So the situation is just like that a damage may occur between two cars. They should not only collide but collide with the sufficient speed. For example, अगर दो cars ने ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣ. So this means that all collisions are not effective. The number of effective collision is only a fraction of total number of collision. Means अगर 10 collisions ने total तो उन्होंने विच 2 या फिर 3 collisions ही होंगे जड़ियाँ की होंगे effective. Okay. So अगर capital Z दसदा number of bimolecular collisions, then small f दसदा कि fraction of those molecules that are activated. So accordingly rate expression is this: rate is equal to Z into F. Z is the number of bimolecular collision and F is the fraction of molecules that are activated. So applying Maxwell-Boltzmann distribution of energy, the fraction, the formula ਹੁੰਦਾ ਹੈ exponential the power minus E upon RT delta N upon capital N. डेल्टा एन दसदा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिन्हां दी एनर्जी ई तो ज़्यादा हुंदी है एंड एन दसदा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. दिस इज बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन और बोल्ट्जमैन फैक्टर. नाउ अगर इत्थे ई दी जगह ते एक्टिवेशन एनर्जी है दैन इक्वेशन बन जूगी दिस वेयर ई इज द एक्टिवेशन एनर्जी. So correspondingly delta n is the number of activated molecules, n is the total number of molecules. This is the rate equation. So rate is equal to Z into exponential the power minus E upon RT where EA is the energy of activation. So ये जड़ा रजे basic formula you have to learn this equation number 3. ठीक है. Now ਹੁਣ collision theory ਦੀ validity ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ collision ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੇ, या तो कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स की होन सेम होन, मीनस अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल ए है सैकेंड भी की होवे सेम, मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स दे विच कोलिजन हो रही है. सैकेंड केस बनूगा कि अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल ए है तो सैकेंड मॉलिक्यूल की होगा बी, मीनस कोलिजन हो रही है बिटवीन डिससिमिलर मॉलिक्यूल्स. सो द फर्स्ट केस अमंग दिस इज द व्हेन द मॉलिक्यूलर कोलिजन आर बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स जिवें ए, ठीक है. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਰਜੇ ਕਾਇਨੇਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਰਿਜਿਡ ਤੇ ਹਾਰਡ ਸਫੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲੀਅਮ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ Z ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ Z ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4. ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ Z ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ए की है V की है एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिग्मा की है मॉलिक्यूलर डायमीटर, एन ए की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. मतलब सपोज किया मॉलिक्यूल्स हार्ड स्फीयर ने, मतलब ऐदा स्फीयर है तो ये जोड़ा है डायमीटर की होगा सिग्मा. हुण जे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हुंदा, ये वाले फॉर्मूले नूं ये इक्वेशन दे विच पुट करन तो बाद इट बिकम्स दिस. नाउ
स्मॉल एम ए की है मास ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मास ऑफ मॉलिक्यूल ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्रेजेंट करना इन टर्म ऑफ मोलर मास ਤਾਂ स्मॉल एम ए इज इक्वल टू कैपिटल एम ए अपॉन एवोगैड्रोज नंबर एंड के इज इक्वल टू आर अपॉन एन। के किया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आर किया गैस कांस्टेंट, एन किया एवोगैड्रोज नंबर। इन्हां सब दी वैल्यूज़ पुट करनी है इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ इज लाइक this. The final expression becomes this. Now we know that rate is equal to this factor, so put the value of ZA from equation second into this equation. The final expression is equation number 8. Now ਹੁਣ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਜੇ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਸਿਮਿਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 8 ਵਿਦ ਦੀ 2 factor. So this is the formula for rate. Now for this equation rate is equal to k into Na square because दो molecules ने। Now compare equation 9 and equation this. Rate left hand side rate है, right hand side दे विच Na square, here also Na square. So compare the value of k and we know ਆਰਹੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਇੰਟੂ ਸਿਗਮਾ ਏ ਸਕੁਅਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ ਪਾਈ ਆਰ ਟੀ ਅਪੋਨ ਐਮ ਏ। ਨਾਓ substitute the value of molar concentration in terms of number of molecules upon Avogadro's number. So from here we can write it in this form. So now derivate this equation. ਇਹ equation ਨੂੰ derivate ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ expression ਆਊਗਾ। ਇੱਥੋਂ DA ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰਜੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, we know that rate is equal to minus DA upon DT, minus D upon DT। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, DNA ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, DNA ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਓਵਰਆਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰੇਟ 2 ਟਰਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਸ ਵਨ ਟਰਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ DNA upon DNA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਿਸ ਵਨ। ਆਫਟਰ ਪੁਟਿੰਗ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਿਕਮਸ ਦਿਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੇਟ ਦਾ ਰਜ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ 4 ਇੰਟੂ sigma a square n upon 10 raised per 3, this whole term equation number 12. Now we know according to rate law equation k is equal to a square. So from here a square, now compare the value of k. Now we know according to Arrhenius theory k is equal to a into exponential factor. Now compare this equation with this equation, we can find out the value of a. What is a? A is the frequency factor. So a raja jehड़ा ਆਪਾਂ complete derivation ਕੀਤਾ, this is for the molecules in which collision are between similar molecules. Now the second case ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ collision ਹੋਣਗੀਆਂ between dissimilar molecules, ਜਿਵੇਂ A ਤੇ B ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, different ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ number of collision per unit volume per unit time ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ। and this sigma AV is the average collision diameter। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ collision ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ, A ਦਾ collision diameter ਤੇ B ਦਾ collision diameter ਦੀ ਜਿਹੜੀ average ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ sigma AB, ਠੀਕ ਹੈ। and this factor is also important, mu is the reduced mass ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ formula ਹੁੰਦਾ। so this is the important terms which you should understand, that sigma AB ਕੀ ਆ, average diameter, mu किया reduced mass। now we know कि molar mass of molecule is equal to molar mass upon Avogadro's number। similarly for B molecule also, and K is equal to R upon N। इन्हां सब दी वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, the final expression is like this। okay, now रजे same rate constant ਦੇ ਲਈ rate is equal to minus dN upon dt, ठीक है। similarly this, and rate is equal to ZAB into this factor। substitute the value of ZAB from equation 17, the expression is this। now rate is equal to k into NaNB। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ rate is equal to k into Na square। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ different molecule ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ Na into NB ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ
हो जूगी फाइंड आउट। सो के इज इक्वल टू सिग्मा ए बी स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ पाई आर टी इंटू 8 एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए इंटू एम बी एक्सपोनेंशियल दी पावर दिस। Now we know Arrhenius theory ਦੇ according k is equal to this factor। now ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ a ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ a ਦੀ ਤੇ b ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, डी अपॉन डी एन ए डी बी अपॉन डी एन ए, बिकॉज आप फाइंड आउट करना फाइनली रेट कि होंगे डी अपॉन डी टी या फिर डी बी अपॉन डी टी। तो इनू आप की लिखांगे सेम है डी एन ए दे मल्टीप्लाई करता, डी एन ए दे की करता डिवाइड करता। हुण डी ए अपॉन डी एन ए की वैल्यू आ गई एंड इस दी वैल्यू आप उपर की कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो पुट कर दो इक्वेशन दे इनसाइड। सो द रेट इज इक्वल टू दिस। नाउ रेट इज इक्वल टू K into concentration of A into concentration of B. Compare this equation with this equation. The K is equal to this. Now we know according to Arrhenius theory that K is equal to this factor. K is also this factor. No, this is exponential factor. Here also exponential factor. Left hand side K. Here also K. Now after comparing, A is equal to this factor. Okay. सो यूजली फाइंड आउट किया गया कि गैसियस रिएक्टेंट दे विच ZAA और ZAB द ऑर्डर है 10⁻30 to 10⁻33 एंड A दैट इज़ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इट इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻9 to 10⁻11 लीटर पर मोल पर सेकेंड। सो रजे हुण आपां ये डेरिवेशनस कर ली रेट दे लई, ठीक है। नाउ इन्ना ही इनफ नहीं है। कोलिजन थ्योरी दे विच फिर मॉडिफिकेशनस कीतियां गईयां। नो डाउट कि जिहड़ा आपां उपर वालियां कैलकुलेशनस कीतियां सी ते एक्सपैरीमेंट कैलकुलेशनस कीतियां सी उन्हां दे विच गुड एग्रीमेंट आया सी, बट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर नंबर ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन गैसियस फेज दे विच देयर आर मैनी रिएक्शन फॉर विच द कैलकुलेटेड वैल्यू इज फाउंड टू बी मच हायर देन ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दिस इज बिकॉज द इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट इज मॉडिफाइड एज दिस। इत्थे रजे न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस होया स्मॉल p इट इज़ नॉन एज प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। दिस अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट ऑल collision between activated molecules may not result into reaction. Only those collision between activated molecules result in reaction which collide with the particular orientation। जिवें हुण रजे एक A मॉलीक्यूल है एक B मॉलीक्यूल है, अगर इन्हों ने हैड ऑन ओवरलैपिंग करनी है तो इन्हों की डायरैक्शन की होनी चाहिए, इदा होनी चाहिए। हुण आए नहीं हैगा कि ए मॉलीक्यूल इत्थे पिया होया बी मॉलीक्यूल इत्थे, मतलब एक पर्टिकुलर की होनी चाहिए ओरिएंटेशन, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कहते हैं, ठीक है। एंड यदि वैल्यू रेंज लाई कर दिया 1 to 10⁻⁹। अगर पी की वैल्यू 1 है तो रिएक्शन की करूगी, कोलिजन थ्योरी ओबे करूगी। वाई इट इज सो, बिकॉज कोलिजन थ्योरी जी आप उपर की सी उहदे विच आपां पी इंट्रोड्यूस नहीं सी कीता, ठीक है। फॉर कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन जिहड़े आप उपर एक्सप्रैशन कीते सी सेम रहणगे रजे एक्सप्रैशन, बट सिर्फ किहदे नाल मल्टीप्लाई होगा पी फैक्टर दे नाल। ओके, हुण जो पी फैक्टर है इहदी वैल्यू भी आ गई। ना सबस्टिट्यूट कर दो जिन्ने भी कॉन्सटेंट ने, तो इक्वेशन नूं सिंपलीफाई करन तो बाद जिहड़े लाइक मॉलीक्यूल्स ने जिवें ए दे विच सीगा तां रिजल्ट आऊगा दिस, एंड जो डिसिमिलर मॉलीक्यूल्स ने जिवें ए बी उन्हां दे लई देख लो रिजल्ट की वैल्यू की आ रही है दिस एंड दिस। Now the limitation of above explanation is that on the basis of kinetic theory it is possible to count for the probability factor as shown as low। मतलब इन्होंने कहा था कि जी पी की वैल्यू बहुत घट होंगी है, इन्नी लो होंगी है, बट नॉट लोअर दैन दिस, मतलब इस तो घट नहीं हो सकती। Hence to account for this limitation another theory was proposed called transition theory। मतलब ये लिमिटेशन है कि ये वैल्यू इस तो लो नहीं हो सकती, बट इसकी लिमिटेशन अगे फर्दर किन्हों ने कवर अप किया सी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ने। सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। टुडे वी डिस्कस अबाउट द कोलिजन थ्योरी and the modification